आर वी लाइव, साउंड आ रही है, फेस कैम विजिबल है, ठीक है। आई गेस ऑल गुड। एक बार चैट खोल लेता हूँ। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वाली लीड कोड वाली स्क्रीन पे स्विच मारते हैं। ओके, इज इट विजिबल? अब हो गया ठीक। नेट चला गया था। और गुड, आई गेस सो। ठीक है, सब सही है। ओके, नंबर क्वालिटी भी देख लो। ऑल राइट, ऑल गुड। अबे स्पीड देख, बढ़िया यार। जल्दी जल्दी सारे लोग हटाओ। चलते हैं लीड कोड की स्क्रीन पे। ये अटक रही है क्या? ये तो बहुत ज़्यादा अटक रही है। क्या रीज़न है इसका? नेटवर्क भी सही आ रहे हैं। अब हो गई ना सही, आई गेस। वेट, लेट मी चेक। ठीक है, अब स्विच करते हैं अपनी लीड कोड वाली स्क्रीन पे। हाँ, लॉग इन करना था ना। मैं लॉग आउट कैसे हो सकता है यार? वेट वेट, मैं लॉग इन कर लूँ। लेट्स गो। फिर से गया नेट थोड़ा। लेट्स सी, क्या क्या क्वेश्चन है आज? कहाँ है पहले एक बार ये क्या है? नंबर ऑफ स्मूथ डिसेंट पीरियड्स ऑफ स्टॉक एंड में देखेंगे, से पहले वेलिडिटी लिस्ट करते हैं। कहाँ थे हम? कॉपी लिस्ट विद रैंडम नंबर, इसे करेंगे तो बाद में करेंगे। सॉर्ट लिस्ट क्या कह रहा है? ओके, रिटर्न द लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट नोड स्टार टेम्प ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे अपना हेड। एक तो देखो यहीं पे रहेगा जहाँ पे सॉर्टेड वाला आएगा। हमें दो नोड्स स्वैप करने हैं इन शॉर्ट।
wait about. क्या था शॉर्ट लिस्ट 4213 ऐसे 4213। सबसे पहले मैंने पॉइंटर अपना यहाँ रखा, ठीक है, और मैंने लिस्ट में फाइंड आउट करा पूरी में सबसे स्मॉलेस्ट, तो मुझे मिला यहाँ क्यू। ओके, नाउ आई विल स्वैप इट विद दिस। ओके, समझा। यहाँ पर भी 2 पॉइंट रहेंगे और यहाँ पर भी 2 पॉइंट रहेंगे, जो कि इन दोनों को स्वैप। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं एलिमेंट ढूंढूँ और सीधा हेड पे लगाता रहूँ, लेकिन नहीं। जैसे कि यहाँ पर हूँ मैं, तो मैं 1 को जो है यहाँ लगा दूँ और एक पॉइंटर यहाँ रहेगा जैसे इससे कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये फॉलो करता है। सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एक क्यू पूरे में रन करेगा और स्मॉलेस्ट ढूंढ के रहेगा। लिस्ट मोड स्टार स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेगा और असाइन करवाता रहेगा। स्टार पी इज इक्वल्स टू नल, ये हेड कर देते हैं नोड स्टार क्यू इज इक्वल्स टू नल। अब ये सबसे पहले स्मॉलेस्ट ढूंढने निकलेगा। First we will find out 1 will direct head, then I will find out 2, I will put 3 head. Yeah, minus 1 here only 0, then 3, then 5, 4। ठीक है, 0 यहाँ ले आया मैं, 3 भी मैं इधर ले आया। ओके, ओके ओके। फाइव और 3 है तो just find the smallest and assign it to the head.
सबसे पहले स्मॉलेस्ट को एडॉप्ट करना है, ठीक है। मोबाइल स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू नल। स्मॉलेस्ट जो होना चाहिए वो टॉप होना चाहिए, उसके पीछे का पूरा सॉर्टेड है, बट बात एक ही है, नल, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट सारे में जाएगा, ये int val is equals to int underscore max, okay. No, then it will always find it, so it should be top, while smallest is not equal to null। अब ये करना है, if if smallest value is less than value, अगर ऐसा केस है तो वैल्यू so value is equals to smallest value, okay, ठीक है। और हमें एक नोड भी रखना पड़ेगा उस पर, जैसे कि मैंने वन ढूंढा तो वन मेरे को चाहिए, ओके। अगर ये एन लॉग एन मान रहे हैं मतलब ये एन स्क्वायर ही हो रहा है, ठीक है। एन लॉग एन कैसे पॉसिबल है? लाइक 4213, ठीक है, ये तो हमने पता करा यहाँ पे। अब एक क्यू तो मैं रख दूंगा स्मॉलेस्ट, एक होगा जो पूरे में एक होगा जो पूरे में ट्रैवल करेगा स्मॉलेस्ट, एक उसके साथ लास्ट स्मॉलेस्ट ट्रैवल करेगा। जैसे कि अगर ये मेरा स्मॉलेस्ट तो क्यों यहाँ होना चाहिए, पी यहाँ होना चाहिए। एक मेरा टॉप रहेगा कि कितनी सॉर्टेड है, तो ये आपके 5 पॉइंटर हो गए टाइम, ठीक है। एक और रखना ही पड़ेगा, स्टार स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू नल,
ओके, अब यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले अपना जो अपना ये लास्ट स्मॉलेस्ट रहेगा, लास्ट स्मॉलेस्ट नहीं से कुछ और नाम देना पड़ेगा, पर ठीक है अभी के लिए लास्ट स्मॉलेस्ट जो होगा वो अपना लास्ट स्मॉलेस्ट वो हो जाएगा अपना स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट विल बी इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट का नेक्स्ट। इसके अंदर क्या करेंगे हम, अगर छोटा है तो पी को हम दे देंगे स्मॉलेस्ट, सॉरी लास्ट स्मॉलेस्ट, एंड क्यू को दे देंगे हम स्मॉलेस्ट। फाइन, दैट्स गुड। और यहाँ पे ये तो हो गया अपना इनर लूप। आउटर लूप क्या कह रहा है अपना, वाइल जब तक कि आपका टॉप नल ना हो जाए जब तक कि आपका टॉप का नेक्स्ट के नेक्स्ट का नल ना हो जाए, नल। ओके गुड। अब हमें जो अपने स्मॉलेस्ट मिला उसे टॉप पे लगाना भी है। ओके रेडी जट दिया तोरा ने। हाँ, और क्या करना है, यहाँ पे इतना तो कर लिया हमने कि ये पी और क्यू, और ये जब यहाँ पे इंसर्ट करना है, इट्स ऑल अबाउट इट। पी के नेक्स्ट को क्यू का नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। पी के नेक्स्ट को ये वैल्यू हर बार मिनिमम ढूंढनी है हमें, ठीक है। और ये जो है कि अपना नल पे रहेगा, ये जो हेड पे रहेगा, टॉप का है अपना। वेट, 20 का ये रहने दो, ये ठीक है। हर बार ही आएगा और नई वैल्यू फाइंड आउट करेगा। और क्या करना था हमें, बेसिक कंडीशंस। अगर अपना हेड 0 to ये if हेड इज टू नल है, और हेड का नेक्स्ट इज टू नल है, तो जस्ट रिटर्न दी हेड। ओके
कहाँ होते हैं? टॉप हेड स्मॉलेस्ट इज टू टॉप, ठीक है, बट ये टॉप का नेक्स्ट होना चाहिए क्योंकि नहीं तो ये हर बार यहीं पे वही वैल्यू उठाता रहेगा, बट फाइन। देखते हैं इसे और क्या करना है यहाँ पे। जैसे कि मेरा टॉप जो है अभी, अगर मेरा टॉप यहाँ, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो तो सीधा यहाँ अटैच होगी, वो लग जाएगी। जैसे बनाया वो यूँ लग गया, बट अब जो ये आएगा तो मेरा टॉप यहाँ पे है, टॉप यहाँ पर होने की जगह बल्कि यहाँ पे होना चाहिए। क्या? टॉप शुड बी एट नल, नल and this is head। ये मेरे को बट ऐसे तो चलेगा नहीं, फिर फर्स्ट वाले लूप नल का नेक्स्ट एक्सेस करने लग जाएगा वो। हम्म हम्म, तेरा तो हेड पे आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, मेरा लास्ट स्मॉल जो है वो नल है, अब हमें जो है इसे सबसे आगे लगाना है जो भी हमें अपना पी और क्यू मिला है। ओके, सबसे पहले तो जब पी का नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू का नेक्स्ट। ओके, सबसे सिंपल सी बात, ठीक है। अब बच गया मेरे पास क्यू, अब ये क्यू रहेगा इसमें क्या होना चाहिए, क्यू का नेक्स्ट जो होना चाहिए ना वो हो जाना चाहिए टॉप का नेक्स्ट, टॉप का नेक्स्ट हो जाना चाहिए क्यू। ऑल राइट, यस, दैट्स व्हाट आई वांट। और अगर इफ ये तो तब होगा
यो। पी का नेक्स्ट क्यू के नेक्स्ट पे होना चाहिए, क्यू का नेक्स्ट टॉप के नेक्स्ट पे। अगर मेरा टॉप यहाँ है, सबसे पहले वन आएगा तो उसे कहाँ साइन करना चाहिए। मैं भी अपना टॉप जाना है, ठीक है। बट अगर जैसे मेरे को -1 होता है तो क्या करूँ मैं, -1 को ही इसी से अटैच कर दूँ, नहीं ना। इफ let's see what can we do। इसकी आगे स्क्रॉल बार, सबसे पहले मेरे पास है 1 1 है, देन 4 है, देन 2 है, देन 1 है, एंड देन 3 है। सबसे पहले मैं आया 1 पे, मैंने 1 को P यहाँ है, Q यहाँ है, इसका लिंक तोड़ के यहाँ लगाया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये 1 जो है यहाँ जाना चाहिए, ओके। तो और वहीं पे मेरा टॉप क्या यही होना चाहिए। जब तक कि टॉप अगर मैं यहीं पे रख दूँ, अज्यूमिंग कि मैंने ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं आया, मैंने देखा कि टॉप और जो है वो क्यू अलग अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इफ तो मैं क्या करूँगा कि क्यू का नेक्स्ट जो है ना टॉप कर दूँगा, क्यू का नेक्स्ट जो है टॉप कर दूँगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये रहेगा हेड, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर वो मेरा सीधा, सबसे पहले तो सीधा हेड पे जाएगी, ठीक है। एल्स इफ अगर अगर टॉप जो है वो हेड के बराबर है, यहाँ पे क्या करना है, क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टॉप, ठीक है। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूँ, अब मैंने ये कर दिया 1 4 2 3, ओके। अब मैं लेके आया 2 को, ठीक है, 2 को। तो मेरा टॉप तो यही है अभी भी,
टॉप तो यहीं रहेगा, तो फिर से ये तो यही करेगा। अगर इसकी वैल्यू टॉप से बड़ी है टू है अगर if if q's value is smaller than top की वैल्यू, देन ऐसा कर दो, ठीक है। और हेड इज इक्वल टू क्यू देगा इस केस में, तो ठीक है। टॉप इज इक्वल टू क्यू ही कर दो, ठीक है। अब एक केस क्या आएगा कि जो क्यू की वैल्यू है जो बड़ी आ रही है टॉप की वैल्यू से, ठीक है। जाना चाहिए टॉप इज इक्वल टू क्यू। क्या दिक्कत आ रही है, हालांकि वेरिएबल को कैसे मैनेज किया जाए तो बहुत ज़्यादा बन गया। सबसे पहले ढूंढा ये तो ठीक है, बट ढूंढते वक्त भी आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ना। स्मॉलेस्ट जो होना चाहिए ना, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू नल, नल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू नल है, तो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू हेड होना चाहिए, नहीं तो जो होना चाहिए स्मॉलेस्ट मस्ट बी इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, ओके। राइट, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, हो ही सकती होंगी। तो अगर वैल्यू बड़ी है हम्म, ठीक है।
ये मूव करवा दिया, टॉप भी हमने मूव करवा दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बारी स्पीड ड्राइवर। ओके, -1, 5, 3, 4 and the last 0। ओके, सबसे पहले क्या सीन है, कहाँ क्या साइन है, टॉप, दिस इज अवर टॉप। ओके, then next smallest s is null, last smallest भी null। ओके, p और q को ऐसे कुछ लेना देना है नहीं। अब टॉप का नेक्स्ट क्या नल है, क्या टॉप का नेक्स्ट नल है नहीं, तो क्या करना है, स्मॉलेस्ट नल है, हाँ हेड है, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू नल है, हाँ तो स्मॉलेस्ट आ गया अपना यहाँ। ठीक है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू हेड, ठीक है, टॉप का नेक्स्ट, ठीक है। नाउ आई स्टार्टेड मूविंग स्मॉलेस्ट, जब तक स्मॉलेस्ट नल है, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू, हाँ तो सो पी हो गया अपना एस, पी हो गया अपना -1, मतलब वैल्यू -1, क्यू हो गया अपना क्यू हो गया अपना नल, पी क्यू हो गया अपना -1। ठीक है, ये आगे जाएगा, ढूंढने से इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब एट द एंड ये क्या करेगा, क्या क्यू की वैल्यू आपकी वैल्यू से बड़ी है, इक्वल है, अगर इक्वल है, अगर इक्वल है ना भाई, एक सेकेंड, तो सबसे पहले मैं आंसर लगाऊँ, लगाओ नहीं इक्वल है ना, तो इक्वल में तो क्या करो, और की दोनों ही इक्वल हो, एफ क्यू इज इक्वल टू टॉप आता है, सो जस्ट मूव, सो व्हाट,
what just don't do nothing। जैसे अपना क्यू भी यही है और टॉप भी है, तो कुछ नहीं करना। स्मॉलेस्ट तो अपना नल हो ही जाएगा इस बारी। ये भी है, ऐसे तो स्मॉलेस्ट हर बारी नल होगा ही। टॉप इज इक्वल टू टॉप तो नल है ही नहीं। मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले केस में ये हेड हो, टू वन एफ 0। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल जुगाड़। नो, मैं क्या कह दिया कि यहाँ पे क्यू और टॉप अगर इक्वल है तो ओके, जस्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू है, ठीक है। टॉप अपना भी यही है, क्यू भी छोड़ो। अब जब मैं सेकेंड बारी में आया तो स्मॉलेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। वो स्मॉलेस्ट जो ये अपना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। should I that's too strange। जस्ट रिमूव इट। सबसे पहले लिस्ट नोड स्टार सॉर्टेड क्या आएगा, नल। कितना सॉर्टेड है, कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। लिस्ट नोड स्टार स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, पी और क्यू, पी पी को ले रहा हूँ मैं, ठीक है। पी पी रहेगा और एक क्यू रहेगा, ठीक है।
मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो है मेरा क्यू नल पे, तो p should be at head. Okay. If maybe wait, ठीक है, अगर मेरा क्यू नल है तो p हेड पे होना चाहिए। if q, अगर ऐसा कुछ सीन है तो p को हेड कर दो, otherwise else just keep it p is equals to q का नेक्स्ट। ओके ठीक है, सबसे पहले वो पूरे में जाएगा, ठीक है। अब ये p और q जो है यही होंगे जो स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करके लाएंगे। It would be the q. Smallest node and its prev list node star smallest list node star prev. Okay, now what am I saying कि सबसे पहली बात तो कि जब तक while q आपका पहले आ रहा है यहाँ पर p रखो पहले, अगर p नल है तो q को हेड करो, और अगर q p के नेक्स्ट पे रखो q को, ठीक है। जब तक कि आपका p का नेक्स्ट नल नहीं हो रहा, p का नेक्स्ट नल सेकेंड वाले वगैरह, जब तक कि आपका q p नल नहीं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इफ एक सेकेंड यार, ये बीटी हो गई 15 दिसंबर ना, 16 चली आ रही तो सबमिट करना पड़ेगा, छोड़ो कोई नहीं, कर देते हैं, देखा जाएगा। जस्ट फॉर द प्रेजेंट आई हैड टू डू इट, लव यू यार, थैंक यू। अब कर सकते हैं हम आराम से। क्यों ये थोड़ा पास नहीं आ रखा, अच्छा ये बहुत आगे लिखा, ये सीन है, ये इंडेंटेशन है। नो इट्स गुड। अब यहीं पे मेरा जो पी है सबसे पहले क्यू पूरे में जाएगा, ढूंढ के लाएगा, ठीक है, और वो आगे लगा देगा। Q will traverse the whole linked list, okay, from P is next, okay, so P is at null, it will completely find in it,
Now next what I have to do, if I find the smallest value, okay, int value is equals to int underscore max, int underscore max, okay, if now if q's value is smaller than smaller than value, ठीक है, so it will always find the smallest value. तो मुझे इसमें स्मॉलेस्ट वाले को तो मैं क्यू असाइन करवा दूंगा. बट नाउ व्हाट अबाउट प्रेव 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 ओके, क्यू प्रेव और रख रहा हूँ मैं, नोड स्टार क्यू प्रेव इक्वल्स टू नल. ओके, यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर जो क्यू प्रेव रहेगा पी. ओके, यहाँ पर क्या होगा, क्यू का नेक्स्ट, ठीक है, क्यू विल बी क्यू का नेक्स्ट. ओके, नाउ द pointer p, I am having two nodes p, one is q and one is pq, so the q will find the smallest and pq will be its trailing pointer, which will give us the p and q like this. Sorry, prev q and q. So if this is smallest, I can connect it with this and I can pick q to take it somewhere. Okay, alright, that's good. Let me write it. What will I do? qp should also move in one case, qp should be assigned q prev of q should be assigned as q, and when I am finding out the smallest, so if I traverse it, so if assuming I sorted this much, now this is my unsorted, in this I am having one smallest which is like 0, so my smallest should be there, and its prev should be here. Okay, same reason. Okay, nice. Smallest, so prev must be assigned as cube prev. Okay, nice. Now now I have found the smallest. Wait, this was our list 5 3 1 and 2. So this code can find the smallest at each place. At first p was here, q completely traverses it and finds 1. Then in next case p is assigned here and q is assigned here, it finds out the smallest in it.
Okay, then P here, Q here, then P here and Q here, then P here. So suddenly when P comes here, if P next is equals to null, so it will stop here, because if one node is left, then obviously it is sorted. Okay, now the next step is like, if I found the smallest, now at what I have to place it at head, not even head, this sorted, this end node of sorted. If this is my sorted, then it should be linked after it. Okay, that's what it says. Fine, let's see what we can do. I finds it out perfectly. Now let's see how will we take it to the next. This is our like traversing to find smallest. Okay, now if anyone is watching, please do comment. Yes, very discovered. Now what's next? I finds out the smallest. Now I have kept a part sorted. Suddenly there is nothing sorted. ठीक है, इसे हटा देते हैं. ठीक है, now I finds out, either I am finding out the head only, or or I finds out some another node. Okay, so if the smallest node that I have found, smallest, एक चीज़ और मैं रन करवाना चाहूँगा यहाँ पे, return null, and like every time I want the value of cout smallest val. Okay, and I want to find out that I am finding correct values or not. Okay, we'll run it one time. Let's see. Okay, seasonal initially, that is also a problem. At first case, it should run int f is equals to 1. Okay, so f or now make it
at first I don't want my P to be head. Is equals to head. But why did I wrote it here? I can just directly write it. I know it is null there. So now the thing is that how will I run it? Too confusing. Q moves completely in it. How do I manage my P? That's the main problem that I am encountering. What? That's alright, we are doing this. Q started from head. Q was head. ओके क्यू तो हम हेड रख देंगे सबसे पहले. हाउ if p is equals to हेड है तो क्यू को हेड रख दो. सबसे पहले केस में पी भी यहाँ क्यू भी यहाँ. then in next case p should be here only and q there. How? What I want is p remains here and q traverses whole. Then p comes here and q traverses whole. Then p comes here. Then p comes here and q traverses whole. This is what I want. So q is normally running from head, but p is first initialized null. So it will come like this. Q, and when p comes here it should be stopped because it is the last node. So it is null and it also have a condition that इसका next null नहीं होना चाहिए. So it should run with null 2 and after first time it should be assigned
it should be assigned P. No, it should be assigned as head, and then it move normally ahead. By that's doable. अगर मेरा P यहाँ पे null है at first case, and then it should be head, then normally move. P is null initially, ठीक है, बट देन ये वाली कंडीशन रन नहीं करेगी. So at first I should made him run or not, or should I start P as head? Then that is a very strange pattern, like then it would be so strange, like P is here and Q is here, P moves, then again P remains here, and then okay, I can do one thing though, like P को भी head रख दूँ and Q को भी head रख दूँ, ठीक है. So in next chance what I will do here is, if P is equals to Q है, then just move Q to the Q's next, and else if they are not equal, at first they are equal, okay, at first they are equal, no, no, in first case PQ should remain normally, then just Q should be moved in the next case, and then both of them should move like this. वही रखते हैं, नल रखते हैं और उसे रन करवाते हैं. P नल है, ठीक है, and here what will happen, I will take a variable int f is equals to 0 1 and f, और अगर पहले वाला ट्रू मिल जाता है तो it will not check the any other condition, and then for next I will make it 0. Okay, now if I had made it 0, now here if P was null, if P was null, then just assign P is equals to head, else what we are supposed to do, P is equals to P is next. I think it should work. What am I saying is,
initially my p is null. Initially my p is null and q is at head. Okay, so according to it, what I wrote, f is equals to 1, so it will check true or not. It is true, so it will run completely, and at the end if p was null, so p will be assigned as head and q should be assigned here. If p was null, so q should be assigned head, else q is equals to q should be equals to if p was null, q should be assigned p's next. Alright, this is like normal brute force of n square that we are moving like this, p then q, and it will give us 2 pointers in return, or it will leave us with 2 pointers, smallest and prev, which are the smallest. Okay, so assuming wait, eraser, assuming I am left with, in first iteration, with smallest is equals to q, this is smallest, and prev as this. Okay, now what I will do, I have to assign it to I have to take it initially. So currently my sorted is null. How much part is sorted? Null. So what I will do, एक बार इसे रन करके देखते हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. Okay. Null. Let's see. Very small mistakes. Okay, so every time it finds, okay, but why didn't find the one? It should find the one now. It should find the one. If q's value, okay, we have to assign it as a value is equals to q's value. Fine, let's check. 1113. Okay, fine, it gave me 1 till here, and then when my p came here and q came here, okay, fine, it worked properly. -1, then q will find it. Okay, that's nice, it worked. Now what am I left with? I find it s, and this is my pref. What I have to do is take it to the sorted part. कितना sorted है मेरा, ठीक है. if एक तो ये हो सकता है कि जो मेरा स्मॉलेस्ट नोड है वो वहीं पे प्रेजेंट था, ठीक है. if head is equals to a smallest, so what I will do,
I will keep it as it is. Just assign sorted is equals to head. Okay, तो ये केस हो गया, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है. else if so I have to else if sorted अगर अपना null है, sorted is equals to null है, तो ये करना है कि जो मैं सबसे पहले तो इसे यहाँ कनेक्ट करना है, प्रेव, ये तो मतलब करना ही करना है, इसको तो पता लेना नहीं. प्रेव का नेक्स्ट should be assigned to the smallest का next. Okay. But it might be possible that that's null. We'll see. Instead of writing it here, अगर अपना पहले वाला ये तो we are not doing anything, so no need to do anything. If sorted is equals to null and it finds a node which is not head, what I will do is pick it and ठीक है, मैं इसे उठाऊंगा, grab का next connected to smallest का next, and I will pick it and next what I will do, q का next, q नहीं sorry, the smallest का next होगा ना, it would be assigned as smallest should be assigned as sorted का next, and sorted का next if it is not equal to null. ठीक है, sorted का next would be assigned as smallest. Okay, और एक और केस हुआ कि if sorted is equals to जो है null है, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, just bring the smallest, you have to do this for sure, do this for sure, and just do one thing, the smallest का next is assigned to the head, smallest next is assigned to head, and the head becomes the smallest. And one more thing, that's fine, either they are both same, sorted will become head. Okay,
if resume sorted, UX will come, so sorted will become sorted next in this case. Okay, else if sorted is equals to null, so it will come and place it ahead. Fine. Any more cases left? What if what should be done? Let's see what we have to return. New head. No problem if I just do this. Okay, no problem. With this case, with this case, uh, mm, I'm having P already there. Just need to fix it a little bit, and yes, then we'll get the answer. Okay, I will do one by one. Wait. What did I found that if sorted was equals to null, just do one thing, that पर्यावरण का जो next है से कर दो smallest के next, and do one more thing is
just do one thing, that smallest next should be assigned to the head, and next sorted equals to also head. Okay, let's see. Okay, how come it cannot recognize, bro? Grab fine. Let's see. Hmm. Hmm. Okay, see you. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. That is not possible. That is just not simply possible. Q was Q. Q moves to the next. And now, if this value is smaller, what the hell is this possible, bro? Q if it is initially null, but but Q has to be equals to null here.
and qprev must be equals to p here. Okay, now here, but I was doing it now. Okay, see out prev. How it is moving behind? How is this even possible? ठीक है, ठीक है. Now what it is doing, qprev is sent to q is sent to qprev and q moves to the next. That's it. Let's see. Okay, at first ठीक है, instead of this I should be writing here the end. Mm-hmm. 3 1 है जी. 3 how qprev is moving 1 ahead instead of it should be giving 2. Wait. It should be 2 1 2 1 2 1.
Whenever I was moved to the next. Smallest one skill. See out. फोर टू वन सबसे पहले 4 इसे स्मॉलेस्ट मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला, ठीक है, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला, फिर 1 मिला, ठीक है, फिर 3 मिला, ये भी ठीक है. So if please tell me. Okay, initially it was null in case of 4. In case of 4, ठीक है, सही बात है. मुझे सही बात है. वहाँ तो समझ आ रहा है कि वहाँ 4 है, बट यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है. यहाँ तो नहीं चाहिए, ठीक, प्रेफ चाहिए. प्रेफ and
smallest key value and run. Just tell me, just tell me, just tell me. Okay, 2 1 2 1, then comes 3 2 1 2 1. 2 is the prem. How come it is storing 3? It should be again 2 now. It should be 2 only. Qprev is equals to null and qprev still equals to p. Now tell me, does it change? Will it change? Yes, now it changed. 2 1 and 1 3. Nice. It was perfectly here. Okay. Now what I will do is if your head is equals to smallest है, जो हमें स्मॉलेस्ट मिला अगर वही हेड है तो स्मॉलेस्ट और मतलब वो पहले पर ही है ना, तो ये करिए, तो जस्ट डू स्मॉल sorted is equals to head. That's it. Else if what I find that sorted is equals to null है, ठीक है. अगर वो हेड ही होता तो वो वही मिल जाता, वो हेड भी नहीं है, तो फिर क्या करूँगा मैं, जस्ट ब्रिंग pref का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू pref का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट का नेक्स्ट. और एक और चीज़ करनी है कि जो अपना सॉर्टेड का नेक्स्ट होगा इट शुड पॉइंट टू दी वेट ये दोनों करेक्ट हो गए. स्मॉलेस्ट, अब जो स्मॉलेस्ट का नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा हेड को. यस, हेड को पॉइंट करेगा. और फॉर एग्जांपल if I have this, then it is connected here, this is broken down, this smallest connect should be pointing here and bring head to the smallest and sorted is equals to head to. ओके, देखते हैं क्या करता है ये. ओके ओके ओके, एक और अपना कर लेते हैं. एल्स इफ अब जो अपना सॉर्टेड जो है वो नल नहीं है,
sorted is not equal to null. same चीज we'll do this, and now this smallest current should be pointing to the sorted का next, and sorted का next should be pointing to the smallest, and last thing sorted should move to the next. At last. No problem. We have this three wait we have 3, 2 and 4. Initially what did I got? 3 and 2, then again 3 and 2, and then I got this is the problem. No problem. 2 4 3 3 2 4 है ना, ठीक है। सबसे पहले मुझे 2 मिला, ठीक है। सॉर्टेड क्या था? नल, ठीक है। मेरा प्रेम यहाँ है, जिसे मैंने इससे कनेक्ट करा, ठीक है। ये ऐसे था, मैंने क्या करा होगा, ये गया यहाँ, इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी ब्रेक डाउन हो गया। Now 2 3 4 was achieved already. Okay. No. एक और चीज लिख के देखता हूँ मैं यहाँ पे, else if लगता नल वाला तो अलग ही, ठीक है। else if अगर स्मॉलेस्ट जो है वो इज सॉर्टेड के टीडी के नेक्स्ट वाला, तो कुछ नहीं करना, जस्ट मूव sorted is this, sorted is next. Okay, let's see this. So after as I'm here now P Q, so I got this as the smallest and this is prem, and my sorted is here. So it will do what? It will connect it to the it connected it here for 2 to the 4. 2 with the 4. PS
2 with 3, 3 with 4. ये आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि सॉर्टेड जो है वो अपना नल नहीं है, सॉर्टेड इज नॉट नल। ओके, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? प्रेप करने जो स्मॉलेस्ट के नेक्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा, प्रेप कर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के नेक्स्ट। ठीक है, हो गया। मान लेते हैं यहाँ कनेक्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट का नेक्स्ट होगा। अच्छा, इसके इसमें करना है मेरे को सिर्फ ये मेरा स्मॉलेस्ट, ये मेरा प्रेप है ना, वो इक्वल है सॉर्टेड के। तो इसके इसमें क्या करना है मेरे को, सॉर्टेड इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट, जस्ट मूव इट अहेड। इतना शॉर्ट हो चुका। पी जो है अपना वो सॉर्टेड होना चाहिए ना। P would be maintained here. Okay. अगर हेड ही स्मॉलेस्ट था तो P को सॉर्टेड पे ले आओ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी क्या करो, P इक्वल्स टू सॉर्टेड, सेम चीज यहीं पे है, P इक्वल्स टू सॉर्टेड and same thing here, bring P equals to sorted. Let's see. Noise. Let's see run कर जा। Oh my god, तो why it was a pure in square. Okay. That's purely in square. Yep. Isn't it the pure n square? Then what's the problem with the n square? If that's the follow-up, I need to check it.
Hmm. I'm confused, like if this is n square and it is asking n log n, then what is the problem? They are asking n square in normal case. I'm giving it, is it n square? Yes, obviously. That is also. No, no. It asks it in follow up. That is a follow up now. It asks n log n in follow up. So n square should run. Mm, okay. Okay. This is n square. So the one which we did was selection short ना. अगर मैं इसको यहाँ कॉपी कर दूँ, what will happen? Just in case, trying to check. What will it say? Selection sort रहेगा. Okay. Now we are supposed to do it in n log n. Now for n log n. What can I do? N log n. N log n. What is reorder? Okay, 0 and then 1. Okay. Inserting the nodes from the last to it.
सबसे पहले मैं मिडल फाइंड आउट कर सकता हूँ। 4 लाऊंगा, then many treaties I will stop.
Baby head we have 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. Slow is at head and it is here. Okay. Slow moves here, fast moves here. Okay. फर्स्ट ना ले नहीं है फर्स्ट में नहीं it moves here, it moves here. The first not equal here it is null. Okay, so we find our slow to be here. Hmm.
पहले ये दोनों यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए था, क्या ये था। Slow was here, slow was here, फर्स्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट गया, स्लो है गया। Slow standing here, first, sorry, slow standing here, no, what, P is here, क्या P के सब स्लो बराबर नहीं, टेम्प, टेम्प प्रेवनल, प्रेवनल है, ठीक है, टेम्प का नेशनल है, नहीं है, प्रेव को टेम्प कर दो, प्रेव इधर आ गया, टेम्प आगे लीव कर दिया, ओके, प्रेव आगे गया, टेम्प इधर आ गया, ओके, क्या नहीं है, नहीं है, प्रेव आगे गया, टेम्प भी आ गया, क्या टेम्प का नेशनल है, हाँ, तो उसने क्या कहा कि अगर प्रेव इसने क्या कहा, प्रेव का जो नेक्स्ट है वो टेम्प का नेक्स्ट कर दो, ठीक है, आई एग्री विद दिस शिट, ठीक है, इट इज नहीं, now this temp is taken and assigned here, where and how, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट शुड बी पी का, टेम्प का नेक्स्ट शुड बी पी का नेक्स्ट, ओके, एंड व्हाट, पी का नेक्स्ट शुड बी टेम्प, पी का नेक्स्ट शुड बी टेम्प, एंड व्हाट एल्स, पी जो है, पी को यहाँ ले आओ, पी स्लो हो गया, वही बात, दैट्स इट, फर्स्ट वन वर्कड ना, अब अगर मैं इसी चीज़ को अब यहाँ पर जो स्लो है वो जो है 3 तक जाना चाहिए, 1 2 3 4 and the 5, okay, now slow is here, fast is here, slow is here, fast, that's it stops here.
It was first external, but I wanted it to. I can do one thing. If first and first next, अगर फर्स्ट नल है तो चलेगा ही नहीं. ठीक है, फिर तो ठीक है. फर्स्ट मिनट तो स्लो ओके. Nice, but that's too much. How come, bro? How come? तो मतलब ऐसी कुछ तो मेमोरी ले रहे ना. भाई ये क्या है? ये क्या है? Lame, bro. Which questions are you going to solve? I was trying to do just some linked list. This was the question. Reorder list. Like we are given a linked list in which the first node has to be kept same, and then put last node after it, then keep the first node, and then n minus 1 node after it. Like end node after the initial node, then n minus 1 after the first node. That was I did in this question. Actually I was also doing this one in this. I did this sort करना था. I did it first of all. Welcome. क्या नाम है आपका? ओमकार भाई. Welcome. Can you tell me question number? I will try with you. It's 148. I did this already. 143. We can try 148. It is sort list. I tried it though with but it was n square and the question is asking for n log n. So currently I am stuck at it. I already gave it 1.5 hour, but let's try again. वैसे क्या करते हो आप? लाइक स्टूडेंट ही होंगे वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली.
अब आ रही है? अब आ रही होगी साउंड, वैसे थोड़ा माइक की प्रॉब्लम है। तो मैं ये कर रहा था शॉर्ट लिस्ट। मैं भी वैसे थर्ड ईयर में हूँ बाय द वे। हाँ, तो ये कर रहा था मैंने एन स्क्वायर में करा था ये, बट जो क्वेश्चन में है वो एन लॉग इन चाहिए। सो अभी मैं अटका हूँ इस पे, और मेरा गोल ये कि मैं लिंक लिस्ट जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर दूँगा। इवन दो इतना इजी भी नहीं है, बट हाँ, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मतलब टॉपिक से हो जाएगा। फिर ट्री ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस लगाऊंगा। लेट्स सी, दिसंबर में अगर मैं ख़त्म कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। Okay, I will also give it a try. So started using this during my starting phase of LeetCode. Yeah, give it a try and do let me know if you get something. I am also thinking. By the way, if you want, you can follow me on Insta. We can talk there also. I will give my ID in the comment section. If you want, you can follow me just for fun. वैसे आपने लाइक सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं? मेरा डीपी बचा हुआ है वैसे अभी, और थोड़ा स्टैक और क्यूब पे थोड़ा सा और अच्छे से कमांड। बिट मैनिपुलेशन बचा है, डीपी चालू है। बिट मैनिपुलेशन भी है, हैवी चीजें हो गई। नाइस नाइस, करो। आप वैसे करते हो स्ट्रीम वगैरह लाइक कुछ, या पोस्ट वोस्ट? मुझे तो वैसे थोड़ी दिन हुए, कंसिस्टेंसी रखने के लिए सही लगा मेरे को, तो मैंने स्टार्ट किया था। एक बार ही थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, फिर देखते हैं कुछ। नो स्ट्रीम, नो पोस्ट, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम ऑल्सो, बट if you want you can start. It also helps in improving conversation skills also. The You are consistently doing it. Also we can connect with different people. While you're trying, you can mute if you want. Okay.
P Q. Login and N would be for like finding the smallest and for it for sure, and the remaining login should be for insertion at that position. I guess so. Or we can swap. We can swap. Hmm. Or we can swap something like swapping. Hmm. You did it. That's nice, bro. मैं तो भाई बहुत देर से अटका हूँ. हिंट दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो. क्रेजी. Storing value. Like we don't have to. Okay. So we don't have to like swap the nodes now. We can directly just change the values. Once you store value, you can do anything. Like I get I pick 0 and store it. No swapping, no? Right. Just change the values, the value of the node. We don't have to like keep the swap the nodes completely, right? That's what you are trying to say. For example, I find say 0 and then just yes, you can overwrite value. Yes, right. 0. If I am having I find 0, then just directly overwrite it with the node and then move ahead. Should I again find it? Minus 5, then 3, then 4, then minus 1. It is again n square. Wait, let me think a little more. You can do this one while I am doing that. 143. Okay, let me think. I misunderstood it. Like in this, we have to like we cannot modify the value. I thought it is also same.
I followed you on Insta. Thank you. I will give you follow back. Okay. Even though you can see how much followers I have, I'm also introvert. Mm. By the way, thanks a lot for joining and also following. That means a lot. Mm. जितना मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं सबसे पहले इसमें जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूँ लिंक लिस्ट में, ठीक है. फॉर एग्जांपल आई गॉट वन एंड आई असाइन इट टू दी which company are you targeting, like it is like for me it is Amazon. I mean Amazon mostly questions are from LeetCode, so first Amazon, then after that I will be thinking that's too much future. Currently I am stuck at link list though. But yes, Amazon for sure. We'll do it for it. Anything, whatever it takes. Mm-hmm. Smallest, find smallest, signs it. By the way, in which college you are? So you are saying like ki I takes I should take area or something like space and like what, store everything in one go. Okay, and for place it. Yes, yes. But the question is saying like take off one memory. I was thinking about it. The main problem is it. Then it can be done in n. If I am taking space, then it is in n. That's actually better than what I wrote. I thought of doing it without taking space. Hmm. Try array. Array question or using array? I use
Python, so I used list. No, I am saying the question is asked, the follow-up is saying for constant space. If I will use an array, then it is not constant, na? I am finding the of one solution with n log n time complexity. Yes, yes. Okay. If let's write the sorted one also. First of all, I will take a vector int sorted. Okay. Fine. Just traverse the linked list. We'll think about the follow-up later. First, I will write what you told me. This node. You're doing it in Python. Why not Java or C++? I have seen mostly doing in this only. Python is so rare. I have heard it first from you. वैसे किसी में भी कर लो, बात एक ही है, बस फंक्शन वगैरह ज़्यादा वो यूज़ ना करें तो एक ही बात है. ठीक है, लॉजिक ही तो है. क्या करना था? sorted pushback temp well just to sorted out sorted dot end. Sorted. Now just store it. Control C. Int is equals to 0. Okay. Temps value is equals to temps value is equals to sorted by. All right. What? Okay. अरे यार क्या दिक्कत होगी? 4213 ये कैसे पॉसिबल है? sorted dot begin sorted dot end. ठीक है, temp की वैल्यू ये कैसे पॉसिबल है? एंड sorted reduced. ठीक है. Vector int sorted
ठीक है, टेम्प में हेड रख लिया हमने। while temp is not equal to null, pushed all values into the vector, moving and traversing it, while it then sorted the array. Y is equals to 0, sorted of y is okay. Y plus plus. It should work now, I guess. The change in your oh, ये कैसे पॉसिबल है? After sorting, let's print it. For it sorted वन टू थ्री फोर, ये तो सही है अपनी, ठीक है, ये तो सही से आई है अपनी, सॉर्टेड तो सही है। नो टेम्प टेम्प जो है अपना टेम्प में हेड है फॉर ऑटोमेटिक जो मैं कर रहा हूँ इसमें हेड की वैल्यू को एडिट कर दूँ और हेड हेड्स नेक्स्ट। ओके, वैसे कल मेरा एंड सेम भी है तो आई गेस I can stream till 2:30. I guess it's been already 2 to 3 hours, around 2:30. I have my ML exam tomorrow. And next, why it is not assigning values? It's not changing. It is not changing. I stored heading temp. Head. मेरा खत्म हो गया एग्जाम। It's okay, I will join next time again. Right, thanks for joining, bro. It means a lot. Nice meeting you.
I will stream daily. You can come tomorrow or whenever you feel you are free. Thanks again. मैं ये वाला करके जाता हूँ इस वाले अप्रोच से, ठीक है। एन लॉग एन तो मुश्किल लग रहा है मुझे अभी, कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा उसमें। यार ये वैल्यू मॉडिफाई नहीं करने दे रहा। टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है ठीक है। मेंबर एक्सेस, ओके। इक्वल्स टू 0, ओके। फॉर photo while I tried bubble sort but it is in square. I think we need a mud sort. Yeah, mud sort, but if we will use mud sort, then for mud sort we require external array, na? It is also taking space. But yes, it will something take mud sort obviously because it contains an log n. Otherwise all other sorting are in square. No memory. We divide set. Okay, हाँ, we swap set, okay. Right. We break it down, doing half every time, and then right. Sorting the fine. Understood. Like breaking it, and then -1 and 5 are at right position, no swapping them. 3 and 5, they should be swapped. Fine, I will try it tomorrow. We'll try it tomorrow with merge. While temp, जब तक temp अनलॉक हो जाए, temp की जो वैल्यू है उसमें sorted का y प्लस जहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वैल्यू मॉडिफाई नहीं करने दे रहा है यहाँ पे ना। Even though I did it, I sorted it and assigned the value. ये क्या है? हाँ, मर्ज सॉर्ट से इसे ट्राई करेंगे कल। देखता हूँ, मर्ज सॉर्ट भी रिवाइज करके आ जाऊंगा फिर अप्लाई करेंगे। 2:30 ना है, अभी 20 मिनट है, कुछ और ट्राई कर लेता हूँ इतने। Odd-even linked list, okay, even at starting and odds at the end. Solve problem of 1 and कितने बजे चालू करती हूँ स्ट्रीम? Tomorrow I'm having exam, so I will do it around like that's too confusing यार। रैंडमली मुझे जब टाइम मिलता है एग्जाम के एक दिन पहले मैं तब कर देता हूँ। एग्जाम के बाद तो मैं आफ्टर 19 जो है रात को ही करूँगा, रात को लाइक 9 से 12, 2 ऐसे। कल दोपहर में होगी मोस्ट प्रोबेबली, 4 to 6 के आसपास करूँगा मैं, और मैक्स टू मैक्स 1.5-2 घंटे के लिए आ पाऊँगा मैं।
The first node is considered odd and is okay. Okay, not the values but the indexes 0, 1, 2, 3, 4. Okay. If I am having 1, 2, 3, 4, so it is 0, 1, 2, 3, and the output should be 3, 2, and 4. Okay. And we have to do it in n time complexity. Relative order density both. Okay. Relative order variant चाहिए. Group all the nodes with the 5. Fine. The number of nodes. ठीक है. I can have a one pointer here. I can name it odd and one even. Sorry, first one is even or odd. Okay, first one is odd, but it doesn't matter. Taking it odd, taking it even. This is 1, 2, 3, 4. So what I have to do? Connect the next odd with the previous. Okay. Or I can just bring, if I swaps this, then also I'm achieving what I want. If I take a longer solution to one, yeah, 2, 1, 3, 5, 6, 4, 7, so this is my odd, this is my even. Okay, so after doing this, at first I will just move them ahead, right? At first I will move them one ahead, so this comes here and this comes here, and just swap their value. Do I have to, can we overwrite the values given the inherit group all nodes? First node is considered, ऐसा mention तो नहीं है but हाँ. So मतलब we can swap the values, no need to swap nodes. So just I can change their value 3 and 1. Okay, now 2, 3, 2, 3, 1. Okay. Is it possible to do like this? Now odd is here and even is here. What I can do? This was 1, this was 3. I swapped it, now it is 1. Should I swap it?
Does it make any sense? Uh, okay. Odd, even, odd, even, odd, even, and odd. So either I can place a pointer at the last odd node and take the next node after it. If I just bring them and do this, just keep the odd nodes, like just if I maintain the odds correctly, then even will come automatically in the order. I don't have to manage them separately. So just to bring odd here, then next odd here, and then next odd here. That's what I have to do. Okay. So if we are given with two nodes, I have to work if there are more than two nodes. Okay. If there are three nodes, then only we should be working on it, otherwise not. If head is equals to null, heads next is equals to null, or heads next is equals to null. If first one would be null, then automatically it will get true and run the condition, no need to check after it. If it is a single node, then also no problem. If there are two nodes, then also there is no problem. Just return the head as it is till two nodes. Now if we have three nodes, what I will do, I will place a pointer at P, okay, and the one pointer at next node. What I will do, I will pick it and place it here. And how will I do it? I need to give a pointer at the previous even also, so that I can connect these both. Here in this case, even though I can access E directly with P, but in after cases I should be having the like value of it. Okay, so I can use three pointer here, Q and R. So what I have to do, just instead of this, I will connect it with this. Okay, and remove this. Okay, and connect it with 1 and connect 2 to 3. Okay, this I can do. Then what I have to move, R को मेरे को अगले उस पे ले जाना है, odd पे, and even को just एक आगे करना है, and P को भी एक आगे मूव करना है. सो जो मेरे को इन स्टेप्स के बाद मिला, जो गुचड़ गुचड़ हुई है यहाँ, इसके बाद मेरे को मिला है यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 1 and then 5 and then 6 and then 4 and 7. Okay, so R मेरा कहाँ पे था, R मेरा 3 पे था, Q मेरा 1 पे था, and P was here. So my Q should be at the next even. Okay,
so it should be moved one ahead, and my R should be after Q if Q is not null, so R should be here, and P should be at the previous order, so it should be done like take Q the next, bring P to the R, and take R to the here. Okay, I guess we are good to go now. We can write it. Let's try. First of all, we have 3 nodes. Brightness करके लग रही P, Q, R, we have to assign them. List node star P is equals to head node star Q is equals to heads next star R is equals to head color next to the next. Okay, so there is no problem in this. We can access easily because we have managed it here. Okay, fine. If there are more than 3 nodes, then this is head, this is heads next, this is 0 nodes, this is 1, and this is 2. Right? Yes. Okay, so if it is like that, now we have 3 nodes. कहाँ गया? Now what I will do, for swapping also, सबसे पहले तो अपनी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी देखते हैं, वो बाद में देखेंगे. वाइल मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए अपनी स्टॉपिंग कंडीशन, सो इट शुड बी कि आर या क्यू में से कोई सा नल नहीं होना चाहिए. आर जो है ऑलवेज नेक्स्ट असाइन किया जाएगा. छोड़ो, बाद में देखेंगे इसे. पहले यहाँ पे हमें नोड्स स्वैप करने हैं. ठीक है, सो ऑर्डर इवन है. ओके, सो what I have to do, just bring this odd here. Okay, this is my odd. Okay, 2 1 3. This is my P, this is my Q, and this is my R. This is 5. This is odd, this is even, this is odd, this is even. I have P, Q, R. Okay, now what I have to do, bring this here. How can I do it? First I have to do Q's next should be assigned as R's next. With this step, what I did, I connected it here. Now what I have to do, R's next should be P's next. With this step, what I did, R's next should be P's next. Okay, now P's next should be equal to R. Alright, now this breaks down and it is like this: 2 3 1 5. Nice. Now what I have to do,
After doing this swap them. Okay, so Q will move to the queue next, and if Q it is not null, what I have to do? Wait, first what I have to do? Bring P to the R, and if Q was not null, if Q if Q was if Q was not null, then I have to bring R is equals to R should be placed to the queues next. Okay, so what my condition says now, that R should not be equal to null. Okay, what if my queue becomes null? Here either queue becomes null. Wait, we'll do a dry run and check it. Let's run this example completely. Sorry. Two perfect circle, bro. Damn. 2 1 3 5. ओमकार भाई आप अभी भी देख रहे हो क्या बाय एनी चांस? दो की वॉचिंग क्यों आ रही है पता नहीं. देख रहे हो तो ऐसे आप कमेंट कर सकते हो. 2 1 3. अच्छा हो आप. थैंक यू रुकने के लिए. क्या कर रहा था मैं नेक्स्ट? 6 4 7. ओके P Q. Fine. I will just end it after doing this. I guess I have almost got it. By the way, कौन से कॉलेज में आप? मैं तो टियर 3 में हूँ. पता नहीं 3 में भी है नहीं वो. ठीक है जो भी है. हाँ तो मैं क्या कर रहा था? This is my odd. This is my even. BIT Pune. I guess it is a good college, na? I guess so. I have heard it name. Nice. So you are originally from Pune or just for college you are there? Q. I can just remove this and connect it here. Okay. ठीक है. What else? Connect it here for college. Nice. I am also not at home. I am from originally Delhi, but currently I am in Noida. And this comes here. So now my link list becomes 2 1 3. Oh sorry. गुड फॉर यू. हाँ सही बात है.
बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। वैसे यहाँ भी है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, लगभग सेम ही है, थोड़ा सही साइड में है, लगभग सेम ही हालात है। या दैट्स इट्स टू बैड। 2315 क्या आ जाए यार, नहीं आई। odd, even, odd, no, PQR, PQR, okay, my P was there, Q was at 1 and it was at R. Now I changed it and brought it to मेरा P क्या डिनोट कर रहा है, लास्ट ऑड, Q क्या डिनोट करेगा मेरा even, or I can say the trailing of it, trailing of odd, and R is my main odd that I have to change the equation like this. Okay. Now Q, I moved Q here and should P be, wait, I did a mistake. And mm, now it is not, it was odd and even, so right, now it's right. Brought my, take, took Q to the here, brought my P here and took R here. Perfect. It worked perfectly till here. Now what I did, it is perfectly right here. I removed this, connected it here, removed this, connected it to the here and connected it here. So if I move down and now I do it 2 3 2 3 6 2 3 6 3 6, wait, what, no, it 6 and 6 is connected with 1 instead of this, it was connected with this. P is next, right? 1, now 5, now 4 and now 7. Okay, where was my P? Was here, Q was at 5 and R was here. Okay, this was odd, this was also odd. आप पहले भी आए हो स्ट्रीम पे या आज ही आए हो? वो was here, even, this is also even and this is odd. Okay, now what I did, I took my Q here, brought my P here first time. Okay, वैसे कल परसों एक भाई आए थे बट तब मेरा लाइक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं क्वेश्चन में भी थोड़ा ज़्यादा फोकस था तो मैंने चैट नहीं देखी थी उनकी, फिर वो चले गए थे. P was here and took my R here. Okay,
Now this is the last step that matters. Connecting this here. Alright. Connecting this here. Connecting this here. Perfect. 2, 3, 6, 1, 4, 6, after 6, 7, 1, 5, 4. P was here. Q was at 4 rows here. What I asked, is it right? 2, 3, 6, 7, yes. Till now it is right. What I did now, moved my Q to the next. I took Q here, and if Q is not null, if Q was not null, assign my, ठीक है, तो मेरा Q null होने के चांसेस है, और just R, और R might also be, ठीक है, P is equals to R, ठीक है, P आ गया. Now my R is still here, so either Q or, I'm not sure about the R1 case. I guess I should go with Q only. What if there was one more even? Just assume there was 8. So Q was bring out to be here, and R here, and R also I can write. And Q and R. I guess that's enough. Head would be the same. Head. चल जा प्लीज, चल जा. Very nice, so beautiful, crazy. करवाई चले, हो गया ये, फर्स्ट ट्राई में हो गया. नाइस. क्या किया हमने वैसे आज? 21 वर्क के थे शायद, ये कितने हो गए? 24 हो गए ना, 3. Okay, bye. We'll meet tomorrow. Thanks for joining in. And yes, nice meeting to you. Thanks for coming. Bye bye.